हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 ऑफ चैप्टर 5। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने से पहले आपको बता दें nth टर्म ऑफ एपी तक के फॉर्मूलाज। फर्स्ट टर्म equals to A. Second term A plus D और A plus 2 minus 1 D। ठीक है। थर्ड टर्म A plus 2D और A plus 3 minus 1 D as usual। फोर्थ टर्म A plus 3D, A plus 4 minus 1 D means nth term equals to A plus n minus 1 D. Exercise 5.2 depend on these formulas. Question number 1. Their D is difference, common difference. Question number first question. A equals to 7, D equals to 3, N equals to 8, An. Formula is An, A plus N minus 1 D, A equals to 7 plus n is 8 minus 1, difference is 3. So 7 plus 7 into 3 equals to 7 plus 21 equals to 28. 28 is answer. Second question. A equals to minus 18, D equals to D निकालना है हमको, N equals to 10 and An equals to 0. Formula put A plus N minus 1 D, An 0, A equals to minus 18 plus and 10 minus 1 D, minus 18 plus their 9D. 18 equals to 9D, so D equals to 18 upon 9, 9 1s are 9, 9 2s are 18, so D equals to 2. क्वेश्चन नंबर 3। ए हमें निकालना होगा, इसमें D इक्वल्स टू -3, N इक्वल्स टू 18 एंड An इक्वल्स टू -5। An इक्वल्स टू A प्लस N minus 1 D, An इक्वल्स टू -5, A प्लस 18 minus 1 into -3, -5, A plus 18 minus 1 equals to 17 into -3, -5 equals to -46 plus A, -51 equals to A. So A equals to -51 plus 51 minus 5, A equals to 46. Question number 4. A equals to minus 18.9, D equals to 2.5,
एन हमें निकालना है। ए एन इक्वल्स टू 3.6। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी माइनस 18.9 plus n minus 1 d there is 2.5 an है 3.6 equals to minus 18.9 plus 2.5 n minus 2.5 3.6 minus 18n minus 2.5 equals to minus 21.4 plus 2.5 n. 2.5 n equals to 3.6 plus 21.4. 2.5 n equals to 25.0. n equals to 25.0 upon 2.5 पॉइंट हटाया 10 आया, दैट इक्वल्स टू 10. n इक्वल्स टू 10. क्वेश्चन नंबर 5, a बराबर 3.5, d इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 105 एंड a n वॉन्ट्स a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d a 3.5 plus n minus 1 105 minus 1 d equals to 0. 3.5 plus 104 into 0, 3.5 plus 0 equals to 3.5. a n equals to 3.5. Question number 2. Question number 2. Choose the correct choice in the following and justify 30th term of the AP 1074. Question number 1, 1074 30th term निकालनी है। इसमें हमको फॉर्मूला पुट करेंगे। A30 इक्वल्स टू A प्लस n minus 1 d. A30 equals to a plus a first term is 10, n minus 1 means 30 minus 1, d there is difference, that is equals to minus 3. How can we say minus 3? A2 minus A1 difference equals to 7 minus 10 equals to minus 3. Again difference A3 minus A2, 4 minus 7 equals to minus 3. So A30 equals to 10 plus 30 minus 1 into minus 3. 10 plus 29 into minus 3, that equals to 10 minus 87. So A30 equals to minus 77. Next question. 11th term of AP minus 3 minus 1 by 2 2, हमें इसकी 11th टर्म निकालनी है। सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल लें इसके में। A2 माइनस A1, A2 माइनस 1 by 2 माइनस माइनस 3, माइनस 1 by 2 प्लस 3, दिस इज इक्वल्स टू minus 1 plus 6 upon 2 equals to 5 by 2. Again difference A3 minus A2. A3 is 2
minus 1/2 equals to 2 plus 1/2 equals to 4 plus 1 upon 2 equals to 5/2. So difference is 5/2. A n equals to a plus n minus 1 d. A 11. A there is -3 plus n minus 1, 11 minus 1, d equals to 5/2. -3 plus 10 into 5/2, 2 1 are 2, 2 5 are 10, -3 plus 25, so equals to -20 plus 22. A 11 equals to plus 22. Answer. Question number 3. In the following APs, find the missing term in the boxes. Fill in the blanks भरने हैं हमको एक तरीके से. फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 पे बॉक्स बना हुआ है 26. सेकेंड टर्म है फॉर्मूला वी पुट A3, क्योंकि थर्ड हमें गिवन है तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे A प्लस 3 माइनस 1 D मीन्स A3 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D. n की जगह हमने लिख दिया 3, दैट इक्वल्स टू 26. सो 26 इक्वल्स टू A 2 है फर्स्ट टर्म प्लस 3 minus 1 D, we don't know, so D. 26 plus 2, 26 equals to 2 plus 2D. So 2D बराबर 26 minus 2, 2D बराबर 24, तो D बराबर 24 upon 2, that equals to 12. So second term A2 बराबर A plus D, A equals to 2 and D equals to 12. So second term is 14. A2 equals to 14. So in a box we fill 14. Question number 2. Question number 2, 13 and 3. This A, A1, A2, A3 and A4. हमें निकालना है A1 और A3 निकालना है हमें. A2 and A4 is given. A2 equals to A plus D, that is question number 1, and A4 equals to A plus 3D. Question number 2. A plus D equals to है 13 and A plus 3D equals to है 3. Equation 1 minus equation 2. A plus D equals to 13. A plus 3D equals to 3. Minus, 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 let's cancel. Minus 2D equals to 10. D equals to 10 upon 2, that equals to minus 5. Means A equals to minus 5. D equals to minus 5. So A1. First, A plus D equals to 13. A equals to A plus minus 5 equals to 13. So A equals to 13 plus 5, A equals to 18. Means first term equals to 18. A3
बराबर a प्लस n माइनस 1 d, a प्लस 3 माइनस 1 d, a 18 प्लस 3 माइनस 1 d इक्वल्स टू माइनस 5, 18 प्लस 2 इंटू माइनस 5, 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8, a3 बराबर 8. सो a बराबर 18 एंड a3 इक्वल्स टू 8. क्वेश्चन नंबर 3, 5 and 9 1 2. a गिवन है, a2 एंड a3 निकालना है एंड दैट इज a4. a4 इक्वल्स टू a प्लस 3d इक्वल्स टू 19 अपॉन 2. 2 9 18 over 19 by 2. a इक्वल्स टू 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19 अपॉन 2. सो 3d इक्वल्स टू 19 अपॉन 2 माइनस 5, 19 माइनस 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3d इक्वल्स टू 9 by 2. सो d इक्वल्स टू 9 by 2 अपॉन 1 by 3. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 by 2. सो डिफरेंस इक्वल्स टू 3 by 2. a2 equals to a plus d. a is 5 and difference is 3 by 2. So 2, that is 13 by 2. a2 equals to 13 by 2. a3 equals to a plus 2d. a equals to 5. d equals to 5 by 2. 3 by 2. 2 से 2 cancel. 5 plus 3 equals to 8. So a2 equals to 13 by 2 and a3 equals to 8. Next question. Question number 4, minus 4, a1, a2, a3, a4, a5 and 6. a equals to minus 4 and a6 equals to a plus 5d. a6 equals to 6. a equals to minus 4 plus 5d. So 5d equals to 6 plus 4. d equals to 10 by 5. 5 1 is 5, 5 2 is 10. d equals to 2. So a2 equals to a plus d equals to minus 4 plus 2 equals to minus 2. a3 equals to a plus 2d, a minus 4 plus 2 into 2 equals to minus 4 plus 4 equals to 0. a4 equals to a plus 3d minus 4 plus 3 into 2. 4 plus 6 equals to 2. minus 4 plus 6 equals to 2. and a5 बराबर a plus 4d. a equals to minus 4. 4 into 2 minus 4 plus 8 equals to 4. So answer is a2 equals to minus 2, a3 equals to 0, a4 equals to 2 and a5 equals to 4.
क्वेश्चन नंबर 5th, ए निकालना है 38, A2 गिवन है A3, A4, A5 and A6 also given. A2 equals to A plus D equals to 38. A6 equals to A plus 5D equals to minus 22. Equation 1, equation 2. From equation 1 and 2, A plus D equals to 38, A plus 5D equals to minus 22, plus minus minus cancel, minus 4D equals to 60, so D equals to 60 upon 4, that equals to minus 15. From equation 1, A plus D equals to 38, A minus 15 equals to 38, so A equals to 38 plus 15 equals to 53. A3 equals to A plus 2D 53 plus D equals to 2 into minus 15, 53 minus 30 equals to 23. A4 equals to A plus 3D 53 plus 3 into minus 15 equals to 53 minus 45 equals to 8. A5 equals to A plus 4D, A equals to 53 plus 4 into minus 15, 53 minus 60 equals to 7, minus 7. So answer will be A equals to 53, A3 equals to 23, A4 equals to 8 and A5 equals to minus 7. Thank you.